Start. Hello and welcome to the Football Parliament podcast, your one stop destination for all your debates, discussions, and opinions. And with me today, I have none other than Guruji with us, Adidev. You must have seen him in our previous videos, you must have seen him all over the Indian football community on the YouTube channels, his own YouTube channel. You'll find the links in the description. First of all, a very, very happy birthday, Adidev. Thank you so much for Thank coming. you. Thanks a lot. Thanks a lot. I mean, what better way to actually celebrate a birthday than talking football, especially. So yeah, it's a great way to start the day. And so sorry to disturb you on your special day No, because no, of no, the no. comic. No. It's not a disturbance. I would actually welcome it. It's not a disturbance at all. It's absolutely all right. लेकिन आज खुश तो बहुत हो गए चेल्सी जीत गई रोनाल्डो हाँ. लुकाकू 2 गोल being a Ronaldo fan somewhat you are a Yeah. Ronaldo fan तो 2 गोल उसके आ गए I'll tell you, I'm not a Ronaldo fan. पीछे मेसी का पोस्टर है. ठीक है. So okay yeah. no I So I'm thought a you were Messi fan. Yeah. I'm a Messi fan. इधर बेड के साइड पे full Messi का पोस्टर है. So I'm like a very hardcore Messi fan. But I respect Ronaldo. I'm not one of those fans who will come on to a debate with Messi versus Ronaldo. I respect exactly Ronaldo for what he has achieved so far. But yesterday, just coming to yesterday's performance, it was full nostalgia mode. सबका on हो गया था. ये सब United fans का on हो गया था. Full nostalgia mode. लेकिन वो टैप And इन था does it happen? It was a. exactly I'm not denying that. First goal was a tap in. Second goal was a good goal. It was a proper Ronaldo goal. yeah it was. physique It was a. strength stamina Yeah, it was a proper Ronaldo goal running off the shoulders. As a acceleration, जो है Ronaldo का generally that is crazy, and the power that he has in his shots, it just gives a goalkeeper काफी कम time to actually react. ठीक है, so although it went between his legs, he could have done it a little bit more, but it's again the power that he has on his shots generally is too much और वो आपके to माइंड में भी actually होता है ना रोनाल्डो डेब्यू कर रहा है ऑपोजिट टीम से मैं कीपर हूँ आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा have to do something. But apart from that, उसने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं रोनाल्डो ने. He was नहीं very much on the periphery. But again, it's like you go back to the game and you say 2 goals from Cristiano Ronaldo on his home debut. I don't think so. He could have asked for anything more. It's just that. But there was a person who actually impressed me a lot more than Ronaldo. Not many people are talking about home debut. It was his home debut. exactly Varane का home debut था ये. no I don't just think so I'll have to Okay, check about that but again, Rafael Varane was amazing yesterday. definitely He yeah, clearances Joel Maguire को partnership देना proper Yes, absolutely. Joel Linton owned him for once or twice, but I think Rafael Varane overall had an amazing game yesterday. Like he won a lot of duels. He was very calm in possession and very calm in containing attacks, primarily when they were जब वो लोग counter पे defend कर रहे थे Manchester United. He was trying to show the attacker onto his weaker foot more often than not. एंड ये सब चीजें बहुत देखने को मिली थी. राफेल वरान इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर. आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस. एंड यस्टरडे जस्ट वो रोनाल्डो का फुल जो शो था उसमें राफेल वरान थोड़े शैडो में आ गए. बट अगेन वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद इट. एंड अगर थोड़े बहुत न्यूकासल यूनाइटेड फैंस भी हैं, दे वुड बी आल्सो हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस बिकॉज न्यूकासल यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा खेला था. काफी maybe अच्छा खेला that था. they were the better team उसमें भी the only good chance they Yes. had from Varane ही पहला रोनाल्डो से पहले गोल मार देता the header he got free हाँ. header he got Yeah. unlucky नहीं तो it was all Yeah. Newcastle उस टाइम तक the counter attacks they were Exactly. playing बस वो थोड़ा Exactly. selfish play हो गया मैक्सिमम से या फिर किसी से भी आप कह सकते हो तो वो लोग नहीं कर हाँ. पाए to get that glory हाँ. वाला thing Exactly. And वो even while defending, they ensured that they are so compact that United just vertically passed the ball around. yeah ठीक है. They ensured that the defense was so compact. United खाली vertically pass करेगा ball, and it was very evident like that. But that's where I think my qualm lies about United is ball progression. yeah ठीक है कि breaking the lines with a certain pass or breaking the lines to actually release a player in the center.
primarily, and not just recycling possession. Okay. Hmm. They were recycling possession a lot because obviously Newcastle were very compact in defense, but nobody um, took many actually bold decisions to probably try a through ball, Yeah. try to break the line. Nobody did that, and it And was. हम्म, हाँ बोल बोल. मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा रोनाल्डो सेंट्रिक नहीं हो गया था? एवरीवन जिसको भी बॉल मिल रही थी दे वांटेड कि रोनाल्डो को दे दो बस. Yeah, 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 And yeah. that is something can I that noticed. can impact you आगे जाके big matches में. Because a Mm-hmm. team like Chelsea or Atletico Madrid team, अगर हम Champions League discuss करें, they will be very compact on Ronaldo. They won't be allowing you easy passes to Ronaldo. तो उस टाइम क्या Yeah. करोगे फिर? या आई मीन वो ये चीज जो है, ये चीज जो बात कर रहा है, वो ये चीज यूवेंटस में भी थी. they always wanted to get the ball to Ronaldo and then think about what happens from there. Okay, so this is the pressure of getting a player who is one of the best players to ever grace the game currently. Okay, this is the pressure of getting that particular player. You have to build a tactic around that player, whether it be Messi, whether it be Ronaldo, they will face this same thing. Okay, with Neymar Mbappe, I would not say they are one of the greatest players ever to grace the game currently. Cristiano Ronaldo and Messi are obviously in Way a higher. much better, much higher echelon than them. But that's why I'm saying, okay, when you get a player as great as these guys, brands basically, not players, brands as great as these guys, uh, the football also doesn't suffer. I would not use suffer because it's a very negative word. I would say the football also changes for that particular team. So वो वही Exactly. चीज है. And talking about home debuts, not at a debut but 10 years के बाद first finally गोल आ गया. 15 मिनट Yeah, में आया लेकिन वो आ गया. गोल आ गया. गोल आ Emotional गया. moment following Chelsea from that point of time. Oh, beautiful, beautiful. It was amazing to see Romelu Lukaku score. I think ये भी podcast पे मैंने बोला था about Romelu Lukaku. I have waxed lyrical about that guy. He is against Liverpool. It was just bad luck that we are one man down. Kai Havertz then gets subbed off because obviously we have to remain defensively resilient. But Romelu Lukaku, when you have a strike partner alongside him, Romelu Lukaku can do a lot of good things, and that both the finishes were absolutely sublime from Romelu. Both the finishes were absolutely sublime from Romelu, and it's just the way he holds the defender with his back to the goal is so good to watch. मतलब ऐसा बहुत टाइम बाद चेल्सी में देखा है कि किसी प्लेयर ने डोमिनेंट किया फिगर है है ऐसी. ऊपर. हाँ, ऐसी 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 चीजें बहुत टाइम बाद, ये होल्डिंग द बॉल वाली चीज तो बहुत टाइम बाद देखी है कि मतलब देयर इज अ प्लेयर हु एक्चुअली होल्ड्स कैन प्ले विथ हिज बैक टू द गोल. गोल दैट एग्जैक्टली. इज एंड ये चीज. हाँ कल उसके मिनिमम टचेस हुए पूरी पिच पे, मैक्सिमम आई थिंक तो 10 भी हाँ टचेस उसने पार नहीं करे एंड उसमें दो हाँ गोल्स थे. हाँ हाँ. दैट इज करेक्ट. समथिंग मोर देन क्लिनिकल. दिस इज वेयर क्लिनिकलिटी इज डिफाइंड. लुकाकू वो एग्जैक्टली. प्लेयर है. एंड मे बी टवानजेबे को आफ्टर द मैच जो उसने एक इंटरव्यू दिया, ही वाज सो स्मार्ट, ही न्यू कि मैं टवानजेबे के साथ खेला हुआ हूं एंड ही नोज दैट मेरा लेफ्ट फुट इज मच लेफ्ट स्ट्रॉन्गर. फुट है. सो ही सेड या मैंने कट इन करा कि मुझे पता था टवानजेबे जाएगा लेफ्ट फुट खेलने मेरे कंप्लीट. जाएगा. हाँ दैट वाज समथिंग. नहीं हाँ तो क्यों हाँ वो अपने इतना बड़ा स्ट्राइकर होके वो अपने आप को बैक कर सकता था लेफ्ट फुट से. मैं ऑब्वियसली क्लियर कर सकता हूँ, मार सकता हाँ. हूँ कोई भी एक कॉर्नर, दोनों ओपन से थे, फार कॉर्नर भी हम्म, और नियर कॉर्नर भी. लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेटेजिकली इतना सोचा उस प्रेशर में, व्हेन यू नो तुम हम्म. चेल्सी के लिए स्टैमफोर्ड ब्रिज पे गोल मार रहे हो. ही इट वाज करेक्ट. हिज ड्रीम, राइट? ये मारूंगा मारूंगा. करेक्ट. Correct. And दैट even वाज let's not forget Mateo Kovacic as well. Uska bhi first goal at Stamford Bridge. एंड द फर्स्ट It, पास दैट ही गिव, दैट असिस्ट टू oh, that was लुकाकू. beautiful. That was. मैं तो देख रहा ब्यूटीफुल. था यार, मैं तो रिप्ले में देख रहा था. रिप्ले में मैं ये नहीं देख रहा था कि लुकाकू के ऊपर फोकस कर रहे थे ना वो लोग रिप्ले पे. मैं ये देख रहा था कि पीछे कोवाचिच क्या का रिएक्शन उसका क्या है वंस ही रिएक्शन. हैज पास. या He's stuck in that follow up motion. मतलब वो देख रहा है कि पास गया नहीं गया गया कि he stuck in that मतलब pose कि once he has passed it he's stuck like that. And wow, मतलब crazy curve लेके it just almost fell onto the feet of Romelu Lukaku. What a एग्जैक्ट. pass, what a pass. मैं पागल हो गया. मैं बोला कि
this is something that probably you would expect from a Mason Mount. But I think I was seeing a video as well on Twitter. I saw this video, and it kind of made me recollect the fact that Mateo Kovacic doesn't get too many recognitions for chance creations. Yeah, Okay. He does create a lot of chances, to be honest. He in the past season also he did that. For Tammy also he did that when Tammy was in the first team. He was doing that for Tammy a lot. So in the build up, at least the first pass that leads to an assist, that pass is more often than not done by Mateo Kovacic. ठीक एंड है. डेफिनेटली जब वो So, पिच पे होता है, वन थिंग दैट इज नॉट स्पोकन अबाउट इनफ इज उसकी ड्रिबलिंग. मेरे हिसाब से चेल्सी में वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर्स है वो. ही कैन ड्रिबल पास्ट हाँ मिडफील्ड एंड डिफेंस टुगेदर एंड यू वोंट इवन नो कि वो पास कर गया. उसकी ट्रिक्स हाँ हो, मतलब जो भी ड्रिबल्स हो वो बहुत बेटर ड्रिबल कर सकता है. कल साउल दीगेस की या उसने रेपुटेशन बचा ली, टू बी ऑनेस्ट. हाँ नहीं तो वो मोस्ट ब्लंडर ऑफ अ डेब्यू होता चेल्सी पे या उसका. या एंड टॉकिंग अबाउट साउल दीगेस, Yeah, bro. I'm nahi nahi. Saul Niguez, I will not hear anything more negative about him because yes, I understand that. Yeah, yeah. first half he was one of the most horrible home debuts we have seen in the past seasons. But Saul Niguez is playing in the first team after a really long time. Okay, and the thing is, last season as well, Diego Simeone kind of screwed up his game because वो बहुत constricted role में रहता था Atletico Madrid में, never got the freedom to actually roam about. He was also played at left wing back as well. So उसको अपनी position ही नहीं समझ में आई थी. Although the season before that he had a cracking season, and he's genuinely a very, very, very good player. Like when we got Saul Niguez on transfer deadline day, I was so happy. I couldn't believe it that we actually got Saul Niguez because the qualities that he possesses, the box to box midfield qualities that he possesses, I think right now he could be, if he reaches his potential क्या मतलब 28 29 पे तो हो गया, but if he starts acting to what if he starts performing like he does, like he did before, I think he could be a third choice midfielder as well. Because if I think about probably pairing Saul Niguez with Kante, that's a very safe pairing, or Saul Niguez with Jorginho, that's a very safe pairing. So I think what happened was for the first 5 5 6 minutes मुझे लगा Kovacic और Saul are not 5 minutes, 10 15 minutes में दो उसने 2 times he was dispossessed. But this was another thing that साउल के साथ हुई है एटलेटिको में कि he has been dispossessed. He has been dispossessed. He is not very good at actually keeping possession of the ball. ठीक है, or not keeping possession of the ball and recycling possession are two different things. Keeping possession of the ball is, yes, he gets brushed off very easily. That is Saul Niguez. That's one of his negatives. But the thing is, in the 10 to 15 minutes that he was there, Kovacic and Saul were kind of promising. I don't know, for some reason they were kind of in tandem with each other because one person is falling back, one person was going forward. That understanding was a little bit there, but what broke him were basically the areas in which he got dispossessed. And this is the thing that he would adapt to. Matlab, it's the Premier League in the end. La Liga is a much more technical league, that is for sure. But that is why I'm saying that when a person who has performed so well in a highly technical league comes into an extremely fast-paced league, he will take time to mold into it, but he will not take time too much to mold into it because he's already fairly technical. Okay, so that is the advantage that we have with Saul Niguez. And once he gets into his vibe, I think that this could spell danger for even a player like probably Mateo Kovacic as well. Because if Mateo Kovacic doesn't maintain this consistency, जो उसने कल दिखाया, Mateo Kovacic is a fairly consistent player. Please don't doubt me there. But then again, now the competition is too much. They've got a Saul Niguez who's they paid some good loan fee for. ठीक है, so अभी competition बहुत ज़्यादा है Mateo Kovacic के लिए, because I'm very very sure that Saul would be taking his place in that particular position. एंड टॉकिंग अबाउट चेल्सी ठीक का है. मिडफील्ड ही, जॉर्जिनियो आया, वी न्यू दैट, लग रहा था इट वाज अ यूएफए हाँ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आया है पिच पे.
स्टेबिलिटी दैट चेल्सी गॉट सेकंड हाफ वाज द चैंपियंस, जैसे हम खेलते थे द चैंपियंस लीग विनर्स की जो हमारी पोटेंशियल था उसके हिसाब से हम खेले सेकंड हाफ। क्लिनिकल नहीं थे हाँ या फिर बीच में एक लिंक था, वो थे नेगेटिव्स, लेकिन स्टिल जॉर्जिनियो प्रोवाइडेड दैट स्टेबिलिटी टू यू जो चाहिए थी पिच पे। तो अब एंगोलो कांटे द अनड्रॉपेबल गाय, अगर वो फिट है, जॉर्जिनियो, मैट्रिक कोवाचिच एंड साउल निगेस, Holding बेस्ट right. मिडफील्ड, कोई Yeah, डाउट। yeah. I feel bad for Ross Barkley. I feel bad looking at Ross Barkley. जो भी कैमरा कल पैन कर रहा था रॉस बार्कली पे, मैंने बोला यार मतलब कि इसके साथ तो बुरा हुआ है यार बस बहुत ज्यादा। ये तो या वो तो सोच रहा था कि यार ये ट्रांसफर विंडो मेरा लास्ट होगा चेल्सी में, मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मैं और कहीं चला जाऊंगा। एंड उसके बाद मैच के बाद टूकल भी उसके बारे में बोल दिया कि if a player comes back from a loan from Aston Villa, we expect him to work hard for the team. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये तो थोड़ा सा मुंह पे बोल दिया बार्कली के वो कि भी। भाई और तुझे तो बहुत टाइम लगेगा। लॉफ्टस चीक भी, अब तो कार्बाओ कप भी नहीं खेलेंगे ये लोग। दो ही बंदे खिलाओगे हाँ मिडफील्ड में, दो दो है ही। हाँ वही तो भाई, वो दैट इज द वरी बिकॉज अभी कैराबाओ पे तुम किसको खिलाओगे एग्जैक्टली। तो अभी हाँ कैराबाओ में मतलब either one of them would play I think because yeah I think रोटेशन चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेजेस में भी होगा, चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेजेस प्रीमियर लीग में होगा, कैराबाओ एफए, हम चार चार टूर्नामेंट्स अभी खेल रहे हैं, ठीक है, हम उसके बाद इधर भी तो जाएंगे, क्लब वर्ल्ड कप भी क्लब तो वर्ल्ड जाएंगे कप हम, हाँ छह क्लब वर्ल्ड कप भी कंपटीशन खेलने हैं, जाएंगे। 6 ट्रॉफी लानी है इस हाँ बारी। हाँ मैंने बाबा से पूछा तो था 6 ट्रॉफी आ रही है, वो कहते पक्का आएगी, 6 की 6। ठीक है ठीक। मैं मतलब उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँगा, पर मैं बस बोलूंगा कि चैंपियंस लीग भी जीत सकते हैं, पर इतना श्योर नहीं हूं मैं, ठीक है, प्रीमियर लेट्स लीग गेट इनटू द हाँ चैंपियंस लीग, या डिस्कस लेट्स करते हैं गेट इन द चार चैंपियंस लीग, चार लेट्स गेट प्रीमियर इन द लीग चैंपियंस, टीम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे यस। एक टॉपिक था, अगर हम 2010 से स्टार्ट करें, द टाइम आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल, द 2010s का एरा, इट वाज द टाइम जब स्पेन डोमिनेट करता था। इफ नॉट अ हम्म विनर बट चैंपियंस लीग में एक फाइनलिस्ट टीम तो होगी ही होगी। स्पेन की होगी, हम्म मे बी जाइंट्स लाइक इटली की यूवेंटस हो गए, या फिर इंटर मिलान होगा थोड़ा साल पहले, और जर्मनी की टीम्स हो गई। इंग्लिश टीम्स का एक वैनिशिंग पॉइंट था कि कोई इंग्लिश टीम्स नहीं थी। आफ्टर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी फाइनल, मतलब एक ऑड सीजन आता था जब कोई प्रीमियर लीग टीम पहुंच जाए फाइनल्स में। बट नाउ हम्म लास्ट 3 सीजन में हम्म। दो फाइनल्स में 4 प्रीमियर लीग टीम्स खेली है फेसिंग ईच अदर। उससे पहले लिवरपूल स्टार्टेड द एरा। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का एरा आ गया वापस चैंपियंस लीग में। आई थिंक यस, आई थिंक यस बिकॉज आई एम लुकिंग, मैं दूसरे लीग्स को भी देख रहा हूँ, मैं ऐसा आई एम नॉट सीइंग एन अ हाईली इम्प्रेसिव टीम एक्चुअली मतलब competing with any of these English heavyweights, बिकॉज तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख रहे हो। एंड ये एक चीज मैंने देखी, एक चीज मैं बस बस पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मैंने और एक पॉडकास्ट में कहीं पे मैं रैंडम ऐसे सुन रहा था और मैंने पॉडकास्ट 5 मिनट भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे ये ओपिनियन मुझे सुनाई दिया और मैं ऐसे बंद कर दिया। मैं उस पॉडकास्ट पे बोला गया कि रोनाल्डो has moved from Juventus to a team which is not even aspiring to be in the Champions League. तो the host said कि why? तो बंदा बोलता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट डिफीटेड बाय विलारियल, मतलब वो का मतलब ये चैंपियंस लीग का क्या एस्पिरेंट है यार, ये यही तो चीज है यही सब दिस इज चीजें द ना थिंग, जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे पॉडकास्ट में क्या हाँ होना चाहिए। यही हाँ एग्जैक्टली यही सब चीजें, थोड़ा मतलब तुम अगर न्यूट्रल फुटबॉल नॉलेज रख लोगे तो यार जिंदगी में क्या हो जाएगा मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्ट। what will you lose in life if you just be neutral towards the game, मतलब it's it's fairly logical to say Manchester United have a good chance of actually of being in the latter stages of the Champions League. It's like a fairly good chance because they have got some great signings. Although Jadon Sancho looked pretty weird yesterday, but I mean they have got other signings to fill that place, and they've got Cristiano, yeah, in the end. So you can't एग्जैक्टली really मिस्टर discount चैंपियंस लीग them. हिमसेल्फ। Yeah, you can't really discount them. You've got Manchester City as well. Manchester City again, good reinforcement in Jack Grealish. Yesterday, a decent win against Leicester लेस्टर। City. Although I didn't watch the game, but from whatever I followed the game, I think it was a decent away win against Leicester, which is a good thing to say. And Chelsea तो सब देख ही रहे हैं कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है, because that Liverpool game just gave me shivers down my spine.
ठीक है, because that Liverpool game gave me goosebumps probably. मे ठीक बी है, वो to ड्रॉ use the ने भी right. एक किसी बड़ी विन से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, ना सिर्फ भाई बहुत प्लेयर्स बड़ी ने, विन, एक बहुत टीम। बड़ी विन। एग्जैक्टली हाँ, एंड हम डोमिनेंट थे, मतलब लिवरपूल वाली गेम अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो उस गेम में हम चांसेस जीतने के हमारे ज्यादा थे एज कम्पेयर टू लिवरपूल बीइंग 10 मैन फर्स्ट शॉट। हाफ, या फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ। फर्स्ट में, सेकंड हाफ में भी अगर हम सेकंड हाफ भी सेकंड हाफ में सोचे, हमने एक क्लियर कट चांस क्रिएट किया जब था। कोवासिच ने ठीक है, मिस वो करा, कोवाचिच ने मिस किया था। हाँ हाँ, लेकिन वो तो भाई मेरे दिल धड़कने लगा। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। Yes, as soon as that phase started, right, लुकाकू ने ले ऑफ किया कोवाचिच के लिए, लाइक कोवाचिच फ्री है, मार मार कोवाचिच। वो मिची बैट्सुआई वाला ओ, मोमेंट था जो एथलेटिको में उसने मारा था ओ लास्ट यार, मिनट गोल, ओ यार, अलग यार गूज़बम्प यार, आता है कोचिच वो गोल मार देता तो। क्रेजी क्रेजी। आई मतलब कोवाचिच की जगह और कोई स्ट्राइकर होता है ना, हैवर्ट्स होता है उसके जगह पे, आदत इट वाज अ माउंट गोल। होता, माउंट होता, कोई हाँ, एक माउंट होता इट वाज क्लिनिकल अ प्लेयर गोल। होता, गोल था वो। हाँ, गोल कोचिच था कल वाली वो। फॉर्म में होता वो भी मार देता। वो भी मार देता। भाई कोवाचिच का कल का फिनिश भाई, ओ ओ भाई, भाई, कैसे मतलब क्या। कीपर खत्म, हाँ, और इतना कीपर काम उसको खत्म। पता था गोल जा रहा है, मुझे नहीं लगा हाँ था वो जाएगा अंदर। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी वही लगा कि मतलब उसके पैर को लगेगी भाई, मतलब एग्जैक्टली कीपर के पैर को लगेगी। और ऊपर से तो ही कोचिच था वुड। वो, उम्मीद भी नहीं होती कि वो हाँ गोल कोविच। मारेगा। हाँ गोल। उसके बाद कोविच का मतलब कॉन्फिडेंस काय हाई, मतलब खाली आगे ही दिख रहा है। मतलब whenever we are on the counter there is only one person screening the defense, that's Jorginho। ठीक है, वो आगे मतलब ही मिले। कोविच आगे ही है भाई। और एक फनी चीज हो गई यार, कल ये हम डिस्कस भी कर रहे थे। ओ भाई, एस्प्लिक्वेटा comes onto the pitch, Thiago Silva is on the pitch, ओ Jorginho who's one of the best European player on the pitch, but कैप्टन कौन है? मार्कोस अलोंसो। मार्कस अलोंसो। और ये वही मार्कोस अलोंसो है जो लैम्पार्ड ने निकाल दिया था, भाई तू जा, तू ट्रेनिंग, एग्जैक्टली, तू रूम में भी नहीं बैठेगा, तू जा, तू बस में जा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बस में जा भाई। तो लैम्पार्ड ने इसको ये भी नहीं बोला कि बस में जा, खुद ही चला गया बस अब में, खुद कि खुद के बस से मैं चला। देखूंगा मैच, हॉटस्टार पे देखूंगा मैच। ठीक है, बस में ही चला गया यार। ओ, तो आई थिंक अभी वो ही वुड बी गिविंग टिप्स टू अदर अकेडमी प्लेयर्स टू बिकम द कैप्टन ऑफ चेल्सी व्हाइल अदर कैप्टन्स आर प्रेजेंट इन द टीम। मुझे ऑल ये यू चीज नीड टू समझ डू नहीं, इज गो जॉर्जिनियो पिच अप पे आया, मैं ये नहीं देख रहा गेम की चल रही है, भाई मार्कोस अलोंसो ने आर्म यू बन रखा है, दे दे भाई। एट। सेम भाई, सेम भाई। जॉर्जिनियो पिच पे, एस्प्लिक्वेटा पिच पे है नहीं यार, दे रहा क्लब का वो छोड़ आ ही नहीं गया रहा यार। भाई। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरे आम पे है, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम जो करना है कर लो। वैसे ओ डिसीजन होता भाई किसका मतलब है, टू मेक द कैप्टन, मैनेजमेंट का, ट्रेनिंग स्टाफ का? मैनेजमेंट का होता है, प्लेयर्स का होता है। सो द इट्स वेरी रेगुलर, राइट, इट्स वेरी रेगुलर दैट व्हेन अ कैप्टन कम्स दैट onto इज the pitch there's a ऑब्वियस। person, yeah, there's a person who just releases the arm and gives it to the captain, नहीं वो but टाइम it's बेस्ड भी very इसी से होता है, जब वो प्लेयर आ रहा है सब्स्टिट्यूशन के लिए उसी को दे दे भाई, जा दे दियो तू, तेरे जगह आ रहा है वो। एग्जैक्टली, नहीं एग्जैक्टली। भाई, बहुत हंसी आई भाई, मैंने ऐसा बहुत टाइम बाद देखा, मेरे फुटबॉल में बहुत हंसी आई मुझको। क्रेजी। बट जस्ट कोडिंग। कमिंग बैक टू द सीरियस डिस्कशंस, English heavyweights, I think these three teams are the teams that I'm looking at currently. Spurs were very bad yesterday, uh, क्रिस्टल but I पैलेस ने think मारा, Palace were good. Palace were good, पैलेस right? मुझे They're not मान ही नहीं रहा था, मैंने तो इवन पॉडकास्ट या लोगों देखा है 18 19 पैलेस नहीं आ रही, वेरा गया, खत्म डेलीगेशन, मुझे पता है कुछ तो कर सकते हैं वो, क्योंकि उनकी साइनिंग्स वर वेरी स्मार्ट साइनिंग्स मेरे हिसाब से। yeah, याओकी yeah, एंडरसन, मार्क गोरी एंड yeah, गैलेगर, great. टॉकिंग अबाउट चेल्सी, भाई क्या हो गया Yes. उसमें वो। या कौन निकालेगा, क्रेजी। मैंने आई मीन वेस्ट ब्रॉम में देखा था और अब देखा बहुत डिफरेंट बंदा है, ज्यादा से ज्यादा वी उसको गोल डोंट मारना नीड है। मिडफील्डर्स, नेक्स्ट सीजन आएगा ना सब वापस, बिली गिलमोर, कॉनर गिलमोर, गैलेगर, गैलेगर, कॉनर गैलेगर, ये रूबन लॉफ्टस चीक तो जाना ही है इसको। मतलब लेकिन आई एक डोंट सी बाकली अ का क्या होगा बेचारा। बार्कली। ब्रो बार्कली also is earning a bomb at Chelsea. ठीक है, एग्जैक्टली, he's earning a bomb at Chelsea. We need to relieve him so that we can free up our wage bill। ड्रिंक वाटर भी तो है, मतलब ड्रिंक वाटर गया ना, कि लोन पे गया, लोन लोन पे लोन गया पे कि गया है, खरीद उसको अरे खरीदने के पैसे कौन देगा, यार। मुझे ये बताओ। आई थिंक फ्री म्यूचुअल टर्मिनेशन कर देना चाहिए भाई, म्यूचुअल बिलियन वाला सीन, टर्मिनेशन या खत्म, ड्रिंक वाटर, सिंपल। पैसे दे देते ड्रिंक वाटर को कि भाई तू जा। तुम रख लो, तुम जाओ। तू तू रख ले, ये ले 1 लाख 2 लाख, तू जा। तू इंडिया, प्लीज तू जा। आईएसएल जाके खेल, अच्छे लीग्स में तू खेल, कहाँ प्रीमियर लीग खेल रहा है।
हाँ हाँ, तू आईएसएल में भी बोल देगा, मुंबई सिटी बोलेगा कि नहीं यार ये तो नहीं जच नहीं। रहा ये तो नहीं जच रहा, ये सब हॉपी पोला में जाके ये मस्त से क्या बोलते हैं, ये मस्त से ये राडा कर रहा है मस्त से। तो आई विल नॉट होल्ड, आई विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर all of his actions at Mumbai City FC, because he's a very rowdy player now. हाँ, He's an extremely rowdy player now. He has disciplinary issues as well. प्री सीजन में तो क्या ही हो गया था इसको। Yeah, dude. Yeah, it's a very sad thing to think about Danny Ringwada, because when he came into the club, मैं genuinely बहुत excited था. मैं कांटे genuinely बहुत Drinkwater are back together, can't take water. Premier League That champions। हाँ, midfield it will be crazy now. मजा आ जाएगा midfield को उस देखने में. क्रेजी But मिडफील्ड से ये क्रेजी मिडफील्ड, ये द crazy सफर, midfield. द हिंदी वाला सफर। Yeah, the journey has been so मतलब era defining, समझ रहा है? ठीक है, the journey has been probably era defining currently, and it's amazing to be honest, because at one point of time when you thought, and this journey में Frank Lampard का बहुत बड़ा योगदान है, to be honest, because without him this could never have happened. I think without Sari, this could never have happened. I'll tell you why. Yeah. Because of the fact, because Sari just got this system into us. So Sari के first season में, one of the reasons why we are so dull was because of the fact that this was an extremely new system to us. ठीक है, playing out from the back. Yeah. ठीक है, with patient progression, with patient ball progression, playing out from the back, attracting defenders onto you so that you can create spaces. This was a very, very new thing for us. ठीक है, and that is exactly why सारी के season में Eden Hazard ने हमको carry किया, because other players just weren't really technical enough to gel so fast, or to actually imbibe the system right into their heads so fast. And maybe ठीक है, so Frank that's when Lampard gave us the momentum कि Hazard से momentum कैसे shift करना है, मतलब Hazard was the main player की जिसके अराउंड गेम चलती थी, and that's very fine as well कि वो प्लेयर है ऐसा जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। पर उसके जाने के बाद एवरी प्लेयर स्टेप्ड अप एंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देमसेल्व्स। एक यंग मेसन माउंट जो अभी चैंपियनशिप के लोन से आया है, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ। टैमी अब्राहम टू एन एक्सटेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विलियन छोड़ दो, बाकी प्लेयर्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन स्टिल मतलब एक रिस्पॉन्सिबल टीम दिख रही थी। प्लेयर्स वो टेकिंग की खेलना कैसे है सिस्टम में, नॉट बीइंग कॉन्सेंट्रिक ऑन अ सिंगल पर्सन। वो टीम चेंज हुई, और मे बी दैट इज हेल्पिंग अस राइट नाउ। एवरी प्लेयर इज अ लीडर इन हिमसेल्फ। मार्कस अलोंसो ऑब्वियसली आर्मबैंड पहन रहा है, लेकिन एवरी पर्सन इज अ कैप्टन इस टाइम पे हमारे साथ। Absolutely. I think Willian, although post COVID he was our best player. Yeah, Like definitely. post Batters lockdown he aside, was. like in Pakka. He was our He best and player. Giroud carried the He and team to Giroud Champions League. were our best players. Yeah. So we need to give credit where it's due. But Willian ka point I completely understand. And the other point being is, when you have Frank Lampard in the midst, when you have a club legend in the midst, a lot of other things changes as well. Like the discipline that he brought into the club, talking about the different training regimes that he made, the disciplinary fines that he had in place, the way he structured the club in a proper sense, that was amazing to see, because that's a great, the last person that I can imagine that I can imagine doing that is Antonio Conte. Yeah. Is being that strict, is being a disciplinarian in that sense, is Antonio Conte. So I think Frank Lampard did that. By the second season he just looked way too lost, and I think I had predicted it at one point of time, because when you have so many starred names in the dressing room, तुम क्या करोगे? Exactly. तब तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट आएगी. And that is where experience lack करा था. Exactly. That's when experience matters. Yeah. But अभी ओले के ऊपर स्पॉटलाइट लास्ट सीजन से ही आ रही है. पर the thing is, with Ole currently, there are a lot of Lampard versus Ole debates that I have been a part of. But I'll always support Lampard. But the thing with Ole is, Bruno saved Ole. Yeah, exactly. And maybe Arteta की साथ भी सेम है. ये दोनों CPR से ही बच रहे हैं. जब लास्ट मोमेंट आता है, क्रिटिकल मोमेंट आता है, ये दोनों जीत जाते हैं पता नहीं कैसे, एंड दे सेव देयर जॉब. सब पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग फाइनल में पहुंची, ओले ने जस्ट एक स्टेप रह गया दूर से. वो ये याद नहीं करता वो चैंपियंस लीग से गया, वो एलिमिनेट होके गया, वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा था कि यूरोपा लीग फाइनल उसने जिता दिया. अगर हम लोग के साथ ऐसी चीजें होंगी, then people would be like कि तुम तो चैंपियंस लीग से एलिमिनेट हो गए. सो ये सब चीजें ना समझ में आती है लाइफ.
ये सब चीज समझ में नहीं होती है. But like I'm not just keeping that spite away. I'm just saying, talking about Ole as a manager, and right now the pressure that he has with United is to turn them into genuine title contenders. If they are not genuine title contenders this season, if they are not genuine Champions League contenders also this season, it's a failure. It's आपके a हिसाब से failure कहाँ for जा रही him. है मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में? चैंपियंस लीग वेडनेसडे स्टार्ट हो Champions रहा League है, में यू नो द ग्रुप मैं स्टेजेस. बोलूं, Champions League में minimum they need to go till the quarterfinals. Minimum. दैट टू डिपेंड्स ऑन द ड्रॉ. I Yeah, that depends on the draw. But अगर आप then एआईएक्स जैसी टीम से एलिमिनेट हो गए तो regardless वहां पे भी यार, लगेंगे. regardless, मैं यूवेंटस में अगर यूनाइटेड देखूं, मैं अगर ना यूवेंटस यूनाइटेड देखूं, मैं अगर डॉर्टमंड यूनाइटेड देखूं, ठीक है, डॉर्टमंड यूनाइटेड वुड बी अ ग्रेट गेम टू बी ऑनेस्ट. बट डॉर्टमंड यूनाइटेड देखूं, डॉर्टमंड पेलेगा तो डेफिनेटली यूनाइटेड को, ठीक है. हालांड वर्सेस बट सांचो है. हाँ, ठीक, हालैंड वर्सेस सांचो, ठीक है. बट I'm still thinking in my head, United have got the resources to probably constrict them. Okay, they've got one of the two best centre backs in the Premier League currently. Okay, and they have got the GOAT, the greatest of all time. Okay, striker. They've got Jadon Sancho. They've got Bruno Fernandes. Matlab, what are they lacking? Bruno Fernandes, Paul Pogba. They're probably Exactly. lacking a defensive midfielder. But is that too much to actually hold them back from being genuine title contenders, or from being genuine UEFA Champions League contenders? No, I लास्ट ईयर fail जब to believe चेल्सी में that. नहीं थी, चेल्सी वाज नॉट इन द टॉक्स ऑफ चैंपियंस लीग विनर्स की ग्लोरी में. इट वाज लाइक Exactly, बिल्डिंग सीजन है. बट जब exactly. क्रूशियल मोमेंट्स आए, वी स्टेप्ड अप. Thiago Silva stepped up in big matches, and Golo Kante stepped Because up in big matches. the manager, when you look at the manager, when you look at the team selections, when you look at how he tweaked Lampard's setup uh, by actually being a little bit possession based, and also passing in square positions. Like he had, when there was a person on the ball, there were three players who used to form a square around that particular person, so that if an opponent is actually pressing the person on the ball, you have three other options around you. He Exactly. always used to have that kind of a system in place in midfield, especially while progressing the ball. And he employed a very good counter-attacking approach. He made sure that his attackers are very energetic in their press, are very coordinated in their press in the attacking third, because that is exactly where we won games. Because once we actually had the ball, or once we actually pressurized them in the attacking third, and they made some mistakes once they came on into a half, that's where we won the ball. So I mean, that is what actually made us win the Champions League. I think I would credit Tuchel thoroughly for that. मैंने एक जर्सी भी ली थी जिसमें मैंने पीछे Tuchel लिखा है, ठीक है. तो वो Because इतना डिजर्व करता है. yeah, I highly credit Tuchel for that, because I think he has transformed some of our players as well. I would not have believed though one season back कि Rudiger ऐसा बन जाएगा. मे बी क्रिस्टियनसन ठीक है. as well. He is in the talks of the best Christian. defenders in the league right now. Yes, exactly. And why wouldn't he be? Because he's been amazing. Rudiger, Christensen, these two players have been amazing, absolutely amazing. So I believe Chelsea के बारे में अगर बात करें, Champions League quarter finals नहीं, Chelsea है ना bro. So I think we need to go till the semi-finals of the Champions League, because we have With the Premier Romelu League Lukaku, title. and win the Premier League title. Talking about the second final जो हमारे पास प्लेयर थी, मैन सिटी. Aggressive player, हाँ. manager you said. चैंपियंस लीग फाइनल में एक मैनेजर जो इतने गूफ अप करा, टुकल ने अगर चेल्सी को जिताया तो सम सॉर्ट में पेप ने मैन सिटी को हरवाया with his team selection, with his tactics. Maybe after 45 minutes भी डिफरेंस बिटवीन टुकल और पेप यही रहता है. कल टुकल ने रियलाइज कर लिया मेरा साउंड नहीं चल रहा, ही चेंज द प्लेयर इन 45 भी. Yeah, पेप yeah, रिस्ट्रिक्टेड था, नहीं मैं चेंज नहीं करूंगा, ये सिस्टम चलेगा ही yeah, चलेगा. And yeah. to do you हाँ. think कि Pep, maybe मेरा एक thought था, if Pep is not getting the Champions League or the Premier League this season, that looks very unlikely. Premier League तो unlikely लग रहा है with the competition around him. Pep is leaving Man City. उसने बोल भी दिया मैं इंटरनेशनल जॉब ढूंढ रहा हूँ. हाँ, उसने बोला ना कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद छोड़ूंगा, बट आई थिंक इट विल बी आफ्टर हिज कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ. ठीक है, मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज राइट नाउ देयर नॉट टू मेनी मैनेजर्स इन द मार्केट. ठीक है. कॉन्टे. हाँ, कॉन्टे कॉन्टे, मे बी या एंटोनियो कॉन्टे. उसको पैसा आई चाहिए, डोंट सिटी को पैसा खर्च करना.
but Antonio Conte would not fit into Manchester City. Manchester City are very extremely fluid for his thinking. Yeah. Okay. And they now, right now, the club has kind of built itself around Pep's ideology. ठीक है, तुम ट्रेनिंग भी देखो उनका, तुम उनकी प्लेयर रिक्रूटमेंट्स भी देखो. So when you look at the whole club and when you look at the whole approach that they have taken towards every game and the people whom they are breeding as well to come into the first team, ये सब लोग पेप के अप्रोच से ही आ रहे हैं. ठीक है, so it has trickled down to that extent. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पेप अगर बाय चांस चैंपियंस लीग भी नहीं जीता, he will still stay on next season. ठीक है, I don't think so he's going. इंटरेस्टिंग. मैन सिटी के चांसेस? मैन सिटी के चांसेस भी so I'm giving you a frank confession. I adore Pep Guardiola. I Messi have fan. been a massive from that point that onwards. Yeah, from that point onwards. I absolutely adore Pep Guardiola, and but the thing is, right now, is just it just becomes very irritating to see him actually make such rash decisions in big games. The biggest game in his life. Biggest games. वो ये Chelsea वाला is not the only example. He's made this. He's made such decisions a lot of times. ठीक है. So he makes such. ऐसा लगा FIFA खेल रहा है. Yeah, exactly. हाँ, तुमको FIFA नहीं खेलना है यार बिग गेम्स में. तुमको FIFA नहीं खेलना है. प्लीज तुम अपना जो लग्जरी ऑफ रिचेस है तुम्हारे पास, we understand that, but please be a little bit pragmatic. मतलब न्यूकासल को 5-0 हराना और चैंपियंस लीग फाइनल हारना, that does not make sense. अगर तुम न्यूकासल को 2-0 3-0 हराओगे, that works अगर तुम चैंपियंस लीग जीत रहे हो तो. No one wants to see कि तुम 7-0 8-0 मारते रहो हर मैच में. करेक्ट. हाँ, वही एग्जैक्टली. वेरी गुड पॉइंट. इट्स नॉट लाइक कि तुम 5-0 6-0 हरा दोगे तो तुमको 2 बोनस पॉइंट मिल जाएंगे. ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना. हाँ, वही प्रीमियर लीग में तो नहीं होता अभी तक. हाँ, नहीं होता ना भाई. तुमको कुछ बोनस तो नहीं मिलेगा. गोल डिफरेंस में तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत आसमान चढ़ जाओगे. ऐसा तो कुछ सीन नहीं होगा तुम्हारे साथ. Exactly my point. तो वही चीज, the obsession that he has with playing attacking football and the obsession that he has with playing not attacking, attractive football, yeah, with playing attractive football takes him down. ठीक है. That obsession he never curbs that obsession. Like he very rarely curbs that obsession. What he needs to do is curb that, and if he curbs that to some extent, I think City do have a shot of winning the Champions League this season. Yes. Next, हमारी चौथी टीम लिवरपूल. साइनिंग्स नहीं लिए, फैंस अपसेट है, लेकिन एज क्लॉप सेट ऑयल मनी नहीं है इनके पास, ये स्पेंड करें. बट अगर क्लॉप को कोई बताए जाके कि हमने भी ऑयल मनी नहीं स्पेंड करा, हमने 4 मिलियन स्पेंड करा, exactly, वो हम बाकी की फीस से भी काट देंगे, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं. Exactly. Exactly. And Liverpool has spent a lot in the past few seasons, man. Exactly. Like somebody आया था, एक नहीं आया था, अलग-अलग विंडो में आया था, लेकिन बहुत स्पेंड करा था उस टाइम उन्होंने. बहुत स्पेंड किया था भाई. Somebody needs to tell him that when you were spending a lot, other teams weren't. कीटा को कितने दिए थे मुझे याद भी नहीं. अच्छी खासी फीस दी थी कीटा को 40-50 मिलियन में लिया था ना ये लोग ने. अब खुद सोचो आप. So I think I'm not even sure about that transfer money, but around that fees as well. But all I know is that they have spent a lot in the transfer windows, and even if they have not spent much in this transfer window, they can't make that excuse कि भाई उनके पास कोई ऐसा oil money नहीं है. भाई तुमने बहुत spend किया है, तुम बस ये मान लो कि तुमको अपना books अभी balance करना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है. ठीक है, ये मान लो. ठीक है, तो that is. हाँ, बोल. हमें एक थॉट दी जैसे कि पेप छोड़ सकता है इन केस सिटी नहीं जीती. क्या यहाँ पे साला छोड़ सकता है लिवरपूल इफ इन केस लिवरपूल भी एक स्टेट भी नहीं रखती, क्योंकि साला हैज अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. वहां पे स्पेनिश जायंट्स बुला रहे हैं, बायर्न म्यूनिख बुला लेगा, पीएसजी बुला लेगी आफ्टर द मेसी एरा. तो मे बी डू यू सी दैट कि हो सकता है साला छोड़ दे? I very much see him. I can see him slotting in for Mbappe when Mbappe leaves for Madrid. ठीक है. I can क्या वहाँ ब्रांड टू ब्रांड रिप्लेस कर रहे हो और एक क्वालिटी टू क्वालिटी रिप्लेस कर रहे हो. Correct. I can really see that happening. So it's not like कि तुमने अभी मॉइस्किन जैसे यूवेंटस चला गया. मॉइस्किन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रिस्टियानो. जो भी बोल रहे हैं सब बेकार की बातें हैं. प्लेयर अच्छा है, लेकिन नो वन इज अ रिप्लेसमेंट टू क्रिस्टियानो एवर.
एग्जैक्टली अभी तो है नहीं, कोई ऐसा या पैदा हुआ नहीं है फिलहाल, तो ये चीज तो है नहीं. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बापे, एंड वेरी गुड पॉइंट, इफ लिवरपूल डोंट विन, आई थिंक साला वुड डेफिनेटली थिंक अबाउट लीविंग, बिकॉज उतना एम्बिशियस बन गया है, नॉट ही जस्ट नोज विन, ही इज अ लेकिन क्वालिटी स्टेक भी प्लेयर. एक सेमीफाइनल्स में तुम रिस्पेक्टेबली बाहर हो, दैट इज समथिंग वो साला कंसिडर कर सकता है। इफ लिवरपूल या फिर क्लॉप उसको मना ले कि हाँ हम और स्पेंड कर रहे हैं, हम तेरे आसपास प्लेयर्स ला रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे दे हैव टू पुट इन अ कर्टिस जोन्स, और अगर कोई और टीम होती, सिटी या फिर चेल्सी होती, तो वहां पे वो एक बड़ा प्लेयर लेके आती एज कम्पेयर टू अपने यंगस्टर को चांस देने के लिए, उसको रखती सेटअप में लाती, बट डायरेक्टली जैसे एलियट है, एलियट को डायरेक्टली नहीं खिलाती मेरे हिसाब से, एक चेल्सी जैसी टीम या फिर वो। तो डू यू सी कि एडवर्ड. क्लॉप, नो नो नो, हार्वी एलियट, हाँ हाँ, हार्वी एलियट, हाँ आई करेक्ट. फील सो कि वो नहीं खिलाते हाँ डायरेक्टली उसको, तो मे हाँ. बी, तो डू यू सी कि चैंपियंस लीग कोई भी स्टेक क्लियर क्रिएट कर रही है लिवरपूल टीम विद कोनाटे एट द नहीं बैक? नहीं नहीं. I think they are still a bit underhanded when it comes to competing with the other teams, because the thing is, the other teams around them have strengthened themselves so much. Okay, it's not like Liverpool are a bad team. They're still a good team, but what I'm thinking is they don't have quality depth. एग्जैक्टली They don't have quality depth. If a major part of their first team gets injured, you are at risk. एग्जैक्टली, ठीक है, मे बी ये लिवरपूल लिवरपूल इज टीम एट वो 2 साल पुरानी वाली लिवरपूल टीम है जो हमने देखी थी, जो प्रीमियर लीग जीती, रिस्क. चैंपियंस लीग जीती, लेकिन 2 साल में फुटबॉल बहुत चेंज हो चुका है। सिटी स्ट्रेंथन हो एग्जैक्टली. गई है, चेल्सी डाउन से रैग से रिचेस में आ गई है अब, मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एक सॉर्ट ऑफ रैग से रिचेस में आ गई है, एंड पीएसजी एंड योर बायर्न्स आर स्टिल देयर, उनको को कभी रूल आउट नहीं कर सकते। पीएसजी के ऊपर तो फाइनेंशियल फेयर प्ले तो कुछ है ही नहीं उनके ऊपर, नहीं नहीं तो वो लोग, हाँ. वो जो उनका ओनर है वो, आई थिंक सो उसका कोई ना कोई इंडियन ओरिजिन है, मुझे नहीं हम्म. पता वो इंडियन ओरिजिन है वो क्या है, गुजराती निकलेगा वो बंदा, पागल है वो बंदा, क्या कर रहा है वो, कर क्या रहा है? Oh, that Gujarati reference. Oh, ये like हाँ, ऐसा वो तो अच्छे से है भाई, याद भी नहीं मतलब. उन्होंने कब कर दिया। पर हाँ, मैं तो, हम पीएसजी के बारे में भूल गए, हम इंग्लिश डोमिनेशन के बारे में इतना बोल रहे हैं. But it's probably English. I'll tell you the storyline for the Champions League this season. I respect Bayern heavyweights definitely. Every time in the Champions League, they are genuine heavyweights. But this time the storyline is PSG versus England. This storyline is that. अरे मैंने Okay. यूट्यूबर्स को देखा, वो फीफा वीडियोस नहीं बनाते, इफ पीएसजी Hmm. प्लेड अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन इंग्लैंड, सारे इंग्लैंड की प्लेयर डाल दिए, पीएसजी डाल दी, इंग्लिश टीम्स के हाँ. प्लेयर डाल दिए, पीएसजी Okay, जीत अच्छा रही है, है। तो मुझे देखना पड़ेगा, ये वीडियो देखना पड़ेगा, मैं लिंक सबका बिकॉज ये सेंड काफी. करूंगा, हाँ, इंट्रीगिंग मुझे है। मुझे फिर रेस्ट ऑफ द काफी. वर्ल्ड करा दिया, सारी टीम के बेस्ट प्लेयर हाँ. खिला दो, वो जब भी जीत रही है पीएसजी, भाई मार रही है पीएसजी उनकी। लेकिन ये फीफा नहीं है, दैट इज व्हाट, ये पेप की गेम नहीं चल But रही है। that's what. So या Pochettino right now wouldn't have even imagined that he would have, ऐसा स्क्वाड. ठीक है, अपने सपनों में भी उसने इमेजिन नहीं किया था. तो दैट्स व्हाट. अभी मैं, आई टू नो मोर अबाउट पोस्टिनो में, अभी वो एक गोइलम बलाक करके एक ऑथर है, बहुत अच्छा ऑथर है, ठीक है, एंड ही इज जस्ट रिटन समथिंग अबाउट पोस्टिनो, एंड वो जो स्पर्स वाली जो साइट थी, वो जो चैंपियंस लीग फाइनल गई, ठीक है, वो वो कैसा वाला बोल बुक सकते में हैं? देयर आर, हाँ, a lot of insights on that. But just talking about Pochettino as a whole, this is his best chance to actually get something in his trophy cabinet. ठीक है. एग्जैक्टली, नेक्स्ट सीजन सेम नहीं होगा, This- कभी भी नहीं नहीं होगा, आएगा ऐसी। ये आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, ठीक है. तुम ऐसा कभी नौबत आएगा नहीं, उस कोई भी, मतलब जनरल फुटबॉल में नहीं आएगा कि मेसी, नेमार एंड एम्बापे विल प्ले टुगेदर. ठीक नेवर। है. It will never happen anymore. This is a once in a lifetime opportunity for any manager. Any manager would be licking their hands, would be licking everything around their ऐसा पूरा चेहरा अपना खुद ही लिक कर रहे होंगे कि भाई, मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी हमको दो. एग्जैक्टली, ठीक है, कि एंड हम पोचेटिनो ऐसा लकी मैनेज. था वो वहां पे था, क्योंकि पीएसजी के पास कोई, जब टूकल हटाया कोई एक मैनेजर का ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे कि वो लेके आए, हम्म. पोचेटिनो अवेलेबल था, उन्होंने लिया, एंड पोचेटिनो शुड फील लकी, फ्रॉम स्पर्स टू पीएसजी, एक बहुत बड़ी जर्नी रही है उसके लिए भी। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी. मतलब ये जर्नी उसकी जो रही है, पोचेटिनो इज अ वेरी गुड मैनेजर. आई स्टिल रिस्पेक्ट पोचेटिनो. स्पर्स के फैंस, आई डोंट वांट टू कस राइट नाउ, बट स्पर्स के फैंस काफी अजीब ओपिनियंस है उनके पोचेटिनो के बारे में. आई डोंट आई डोंट अंडरस्टैंड, नो आई व्हाई, स्टिल डोंट. हैरी आई केन डोंट की अंडरस्टैंड. डेवलपमेंट, सॉन की डेवलपमेंट प्रीमियर लीग में, स्पेशली एन एशियन प्लेयर हाँ. की आउट के आना, एंड हैरी केन की डेवलपमेंट भी, बिकॉज सॉन के साथ ना या. पॉलिटिकल इश्यूज बहुत है,
मे बी वो नॉर्थ कोरिया में है, तो इफ वो वर्ल्ड वो जो हुआ था ओलंपिक्स नहीं पता कौन सी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, वो नहीं जीतता तो कॉमनवेल्थ गेम्स, फुटबॉल नहीं खेल पाता। मिलिट्री वाली, हाँ हाँ मिलिट्री मिलिट्री वाली वाली। सीन। तो उन हाँ सब हाँ चीजों में हाँ। हैंडल करना अपने प्लेयर को भी अपनी टीम को भी, दैट इज अ वेरी बिग थिंग जो पोचेटिनो ने करा। Look at the resources that he had when he went to the Champions League final. एग्जैक्टली। The resources that he had, लूकास मोरा and he बेस्ट प्लेयर went. चल रहा था उस टाइम पे उनका। लुकस मोरा बेस्ट प्लेयर चल रहा था, लुकस मोरा ने ड्रीम कर दिया भाई उसके लिए। एग्जैक्टली। उसके बाद यू हैव लुक एट द डिफेंस यार, टॉबी ऑल्डरवेल्ड, वर्ल्ड डायर इन ऑन द, हाँ बंदा ऑन बीच में द जा रहा डेज था, दे आर, हाफ टाइम पे भाग के बीच बीच में पता हाँ नहीं कहाँ करने जाता, वॉशरूम मुड़ के वापस आता। ऑन देयर डेज दे आर बैंग एवरेज डिफेंडर्स, बट पोचेटिनो ने क्या बना दिया भाई उनको। मतलब टॉबी टॉबी ऑल्डरवेल्ड, फॉर अ टाइम आई रियली रिस्पेक्टेड हिम, बट उसके बाद मुझे उसकी खामियां समझ में आ गई क्या है। वर्टोंगन वाज जेन्युइनली, उसका सेलिब्रेशन सुपरमैन वाला जो करता था, हम्म। कुछ कुछ मैचेस में वैसे ही डिफेंडिंग करता था, और वो क्रंच गोल्स जो लेके आना होता है ना कभी कभी टॉटनम के लिए, वर्टोंगन लेके आता था। एंड दैट पार्टनरशिप वाज अमेजिंग। सो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि दीज गाइस kind of don't really respect what Pochettino has done for them. ठीक है, and that kind of, as a neutral football fan, कभी कभी बहुत गंदा लगता है, because Pochettino is genuinely a good manager. Yes, it's back to that whole Lampard वाला philosophy that we are discussing about कि how do you handle really star players in your team now, in your मच बिगर dressing room. स्टार प्लेयर्स जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं इस टाइम पे। क्योंकि डेविड मॉयस के साथ भी ऐसी चीज हुई थी when he came to United. या ठीक है, एवर्टन was a mid table side. जो ठीक है, साफ सेलेक्ट Everton करा was था। like a proper mid table. या हाँ एग्जैक्टली, एंड उसके बाद यूनाइटेड आके सब कुछ चीजें उसकी बिखर गई। पोचेटिनो के साथ भी ऐसी चीज होने की पोटेंशियल है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू हैव दीस प्लेयर्स ना, यू जस्ट नीड टू गो एंड टेल देम कि प्ले योर गेम। समझ रहे हो, जस्ट प्ले योर गेम, जो भी आता है दिमाग में करो। ठीक है, क्योंकि क्या, what do you have to lose? You have Sergio Ramos defense, you have Preston या Kimpembe, you have Ashraf Hakimi, you have लेफ्ट में उनका कौन है, यूएन बर्नार्ड। बर्न लेफ्ट बर्न में कौन है, बर्नर्ड। बर्नार्ड ना, हाँ बर्नार्ड। you center, you have a very very interesting and a very good signing in Wijnaldum। ठीक है, who वाइनाल्डम can, और बैक पे कीपर्स भी दोनों वर्ल्ड क्लास, एक इंजर्ड हुआ दूसरा भी उससे Donnarumma, बेटर है। हाँ एग्जैक्टली। Donnarumma, Keylor Navas, you have two world class keepers there। उसके बाद you have, for me, the greatest of all time, that is Lionel Messi। या you एग्जैक्टली। have Lionel Messi, Neymar, Mbappe, Di Maria, Draxler। मतलब क्या चाहिए? वराटी इन मिडफील्ड में भी you अपने have जो Varane, खिला सकता you है have पूरी गेम। Varane, Idrissa Gueye, you have all the, you have proper good, very balanced midfield three इकाडी भी है in नहीं गया। Verratti। इकाडी है Sorry, इस सीजन, इकाडी इस सीजन है ना। इकार्डी है, इकार्डी हाँ है, इकाडी इकार्डी भी है। है। इकार्डी तो हॉलीडे के लिए आया है, ठीक है। सो इकार्डी हॉलीडे के लिए आया, लेट्स नॉट कंसीडर इकार्डी। भाई भाई बहुत ओवररेटेड प्लेयर है इकार्डी, मोरो इकार्डी इज वेरी ओवररेटेड। I would like to say this, he's extremely over. I don't understand the whole hype around him. He is not a, and he's not an absolutely superb finisher. He is like थोड़ा सा hyped Miku। या ठीक है, ठीक है, ही इज लाइक अ थोड़ा सा हाइप्ड मीकू। आई लाइक दैट ठीक है, रेफरेंस, हाइप्ड मीकू। या ही इज लाइक थोड़ा सा हाइप्ड मीकू। ठीक है, वन सीजन वंडर, उसके बाद लॉस्ट इन द वंडरलैंड्स। ठीक है, मीकू वाज जनरली लॉस्ट इन द वंडरलैंड्स। ये तो मतलब इसकी एजेंट जो है, इसकी एजेंट बीवी जो भी बोलो, उसके वजह से ये तो मतलब चल ही रहा है मतलब। और इसने ना सिर्फ तो पीएसजी की लगा रखी है, मिलान पूरा हिला रखा है इसने अभी तक। मिलान मिलान हिला को रखा समझ है नहीं आ पूरा, रखा। इटली इटली में सबके पसीने छूट गए इसके वजह से। मतलब ये वैसे ही चल रहा है माउरो इकार्डी। सो माउरो इकार्डी मैं नहीं, मैं आई डोंट कंसिडर हिम, रेट हिम टू मच, बट डी मारिया, दे हैव डी मारिया as well, they have Draxler as well, and they have a good contingent of players man, which you can definitely tell them that hey तुम जाओ अपना गेम खेलो, हमको तुमको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फैंस बाहर बैठे हैं, फैंस को अपना मनी स्पॉट दो। That's all that you have to tell them sometimes। एग्जैक्टली। एंड पीएसजी के साथ ये है कि नॉट जस्ट पीएसजी, वर्ल्ड फुटबॉल में ये है, नेक्स्ट सीजन विल बी वेरी डिफरेंट। हालैंड पक्का मूव हम्म करेगा, वी ऑल नो दैट फैक्ट। एम्बापे ने तो इसी साल छोड़ देता अगर ऑप्शन दे देते उसको तो हम्म वर्ल्ड फुटबॉल विल चेंज, मे बी स्पेनिश जायंट्स विल राइज अगेन। रियल मैड्रिड विल बी बैक टू हम्म देयर बेस्ट अगर हालैंड या एम्बापे एक भी आ जाए या दोनों आ जाए, अगर पेरेज का कुछ चल हम्म जाए तो। बार्सिलोना विल बी हम्म स्ट्रॉन्गर मे बी। बार्सिलोना का यू कैन नॉट से एनीथिंग इस टाइम पे व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम। सो मे बी दैट विल बी अ स्टेज जब तुम compete करोगे असली में, लेकिन दिस इज द स्टेज यू कैन हम्म चेरिश, हम्म मे बी एन एज एन yeah इंग्लिश टीम या एज पीएसजी एज वेल।
Right. Yeah, absolutely. Barcelona right now also look a bit strong as well, because again, Antoine Griezmann अगर चला भी क्या है, that is a big hole to fill. But Memphis Depay has been amazing for Barcelona, and international duty पे also he was crazy. So I think Memphis Depay जितना influence उसका Leon में था, I think he's doubled that influence with Barcelona. I think he likes playing with stars. That's Yeah. very good quality to have. He likes being the center of attention. That's a very, very good quality to have. So and that's what I admire about Memphis Depay, that he wants the responsibility. He wants, everybody's thinking now Messi is gone, Memphis Depay has to step up. Yeah. But he likes doing that. I think from whatever I've seen so far, he likes doing that. So I think Barcelona could benefit a lot from that. But long term, I don't know how much transfer window pe they would be active, because unki finances are on some other level right now. डेफिनेटली उनको भी एक इंडियन ओरिजिन गुजराती बंदा चाहिए. Yes, my friend. एंड एंडिंग दैट डिबेट, मैं ये पूछूंगा, इंग्लिश टीम की हमने डिस्कशन करी, चार टॉप इंग्लिश टीम से जो प्रीमियर लीग में हैं, हाउ डू यू रेट देम? इन चारों को रैंक कैसे करोगे चैंपियंस लीग ग्लोरी के लिए दिस सीजन? Oh, very tough to do that. I think यार मैं अभी जो भी prediction दूंगा ना, and obviously I'll share this video in my Chelsea group. People will again tell me कि क्या होपफुली कर आता रहे हो है आदि किसी ने सुना. हाँ, किसी ने डेफिनेटली कोई सुनेगा, ठीक है. कोई डेफिनेटली सुनेगा. अरे यार क्या असमंजस में डाल दिया यार मुझको, बट ठीक है. नहीं, I'll be absolutely safe, ठीक है. चेल्सी I'll टॉप. say I'll say Chelsea top, ठीक है. I'll say Chelsea top. Next is City, ठीक है. Next is City. Third is United, ठीक है. And fourth is Liverpool. या third is Liverpool, fourth is United. बट फॉर मी थोड़ा सा उल्टा होगा. आई विल से यूनाइटेड सेकंड, सिटी थर्ड एंड फोर्थ लिवरपूल. बिकॉज City third. I just say because Manchester United के साथ ना similar sort of Chelsea वाला thing हो सकता है, where they might sack Ole mid season Champions League group stages के बाद और Conte आ गया. तो I feel that he is a man player जो एक half season में भी टुकल जैसा काम कर सकता है. Conte, I think, more likely to come to Arsenal, because Arteta will be sacked earlier. That is a debate for another day. Who will be sacked first? Yes, Ole who will versus be sacked Arteta. first? Ole was Arteta. फिर I think उन्होंने Ole दो अपनी गेम जिता job के हो बचा गया लेगा उसका. थोड़ा टाइम. Ole उन्होंने थोड़ा 3 गेम job जीते. बचा लेगा. रोनाल्डो उसकी हाँ, बचा देगा. रोनाल्डो ब्रूनो खुद ही हाँ. खेलते रहेंगे. खुद ही खेलते रहेंगे, ओले की जॉब बचाते रहेंगे. वैसे हाँ. जैसे ब्रूनो ने पोस्ट लॉकडाउन नहीं, जनवरी में ओले की जॉब बचाई थी, as soon as he came in. तो वो भी वापस ये दोनों अपने आप खेलते रहेंगे और ओले का जॉब बचता रहेगा. आई थिंक आर्टेटा के लिए कोई है नहीं ऐसा, ठीक है. आर्टेटा के पास ना दिमाग है ना या प्लेयर्स हैं, तो ठीक है. फिर मे बी आर्टेटा यूनाइटेड, अगर ओले सैक हो हाँ, गया तो बाद में आर्टेटा टीम. आर्टेटा यूनाइटेड हो गया तो यूनाइटेड वाले तो पागल हो जाएंगे भाई. यूनाइटेड वाले तो रिवोल्ट करने लगेंगे कि भाई हमको नहीं चाहिए. रेजर्स यहीं मतलब रुको, तुम इनको भेजो पहले. तुम इनको भेजो पहले, एक काम करो, मेरे पापा इससे अच्छा मैनेज करेंगे. रुको, उनका मैं अभी सीवी भेज रहा हूँ आई डोंट तुमको. नो इफ यू नो थॉक दैट को भेज दो. हाँ, थॉक दैट के साथ वो वीडियोस बनाते हैं, उसको भेज दो, बेटर है. इनसे तो बहुत बेटर हाँ. है सबसे. इनसे तो बहुत बेटर है भाई. स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को टैप कर दो, स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को भेज दो, वही खिला लेगा, मतलब उधर आराम से. यही चीज है भाई. एंड टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स, एक प्लेयर कल मिस हो गया था पूरे मैच में. हमने देखा जॉन टेरी वर्स. कमेंटेटर्स डिस्कस कर रहे हैं वो किसको सपोर्ट कर रहा होगा चेल्सी आर्सेनल का. चलो शिट है. वेयर इज जॉन टेरी हेडिंग टू नेक्स्ट? I think he'll take a break. I think the way Gerard also waited for some time to actually get his license, ठीक है, work towards it for 1 or 2 years before coming to Rangers. I think that is something that Terry would also do. I think he would take some time to actually just concentrate on getting the license, and then concentrate on getting better at the job, ठीक है, before actually joining any other club. So I think that is रोल इन चेल्सी बोर्ड चेक की तरह. yes. I do see that. I'm not denying that. I do see that, and I think Thomas Tuchel also likes having Chelsea blood in the back staff, because when he came into the picture, he never the under-23 का हमारा कोच का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, बट लास्ट ईयर हमारे वाला याद है under-20. मुझे, जब जॉर्डी वर आए थे
मॉरिसन हो रहा, लेकिन हाँ, फिर उसके बाद they didn't leave. Like Jody Morris and Frank Lampard left, but जॉर्डी मॉरिस, फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ और एक बंदा भी था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कमेंट्स पे किसी को याद है प्लीज डाल दो, ठीक है। बट ये चीज उसने उसको जाने नहीं दिया, ठीक है। उसने बोला तू रहे। नील बाथ स्टेड, ठीक है, हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट, नील बाथ स्टेड, ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ही वांट्स ऑल ऑफ दीज चेल्सी, he wants all of these, you know, people who know the club well at the club, that speaks a lot about the manager. And I think that's a role that John Terry would also like, somewhere around the lines of probably teaching the academy a thing or two. So Yeah, that's the next step I think that John Terry would take once he comes to Chelsea. definitely. I think this is it. आदिदेव भैया का बर्थडे और इससे ज्यादा खराब नहीं करना चाहूंगा मैं ज्यादा टाइम लेके. Thank you so much for coming. Thanks a lot, man. Hopefully, Thanks. seeing you soon, very soon again on the channel. Thank you so much for Yeah, coming. That's it for thanks today. a lot. If यहाँ तक किसी ने देखा है तो I don't know, like, comment and share कर देना, and do remember to share the video as soon as you see. Thank you.